क्रिटिसिजमखौ जोंनो नांगौ क्रिटिसिजम नङाबा मोनसे मोजां थुनलाइ सोरजिनो हाया आं आरो बारा बुंनो गैया जोंनियाव क्रिटिसिजमा थाखागोन दिनै बर' थुनलाइ आफादा मा मावदों होननानै सोरबाया बुंदों नाथाय बिथांमोनहाबो नुनानैबो नुयै बायदिसो जानानै थादों 1952निफ्राय दिनैसिम बर' थुनलाइ आफादा मा मावदों बिथांमोनहा हयथ' सोंखारिनोबो हागौ सोरबा आन्दार मेट्रिक सोरबा मेट्रिकुलेट बेफोरसो दा सालायगासिनो दं बेफोरबायदिबो बुंनो हागौ नाथाय बेफोरनो दिनै जाय आन्दार मेट्रिकमोन बिसोरनो दिनैसिम बे बर' थुनलाइ आफादखौ जौगाहोदों आं आरो बारा बुंनो थाङा जोंनि गेजेराव मोजां थुनलाइ सोरजिनाय जानांगौ आरो बेनिफ्राय बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि गेजेराव फरायग्रा मोनसे जा हारिमु बे हारिमुखौ जोङो जेब्लाबो फोथांनानै लाखिनांगोन बाराखौ आरो आं बुंनो थांलिया नोंथांमोननि सिगाङाव आं फंनैसो बुंबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि जोंनि नङाब्लाबो इंराजिनि गोदान बोसोरनि आंनि गाहाम हामलायनाय बावबाय आरो लोगोसे आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे खुलुमनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ गोजोनबाय बावखांनानैनो सिरिबाङै जोंनि बे जौसाङाव थि खालामना दोनखानाय मानसिखौ लानो थाखाय आं खावलायबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आरो 1 घन्टा सम बाहायनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोयो बेनि थाखाय जोबोरै खावलायहरबाय बर' थुनलाइ आफादनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि फारसे नोजोर बिथांमोना गासैबो बेहाय जोंनि बिजाब दिहुननाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बेजों लोगोसे बान्दाया फाखौ खावलायदों हाबाफारियाव बान्दाया आफादनि मैखोम बिबान लागिरिफ्रा लाफानो हायो बिथांमोनखौ खानाय जाबाय आं सानखांबाय बिथांमोना गाव गावनि बिजाबखौ बेसेनसोबो मावहायाखै बिथांमोना जादों डक्टर बिएन नार्जारि जोंनि बिजाबा बिगियान आयदायाव नमस्कार सर सम्मानीय हमारा बङाइगाव रिफाइनारी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री LW खंबीर जी और तेखेतर लगत अहा आमार बङाइगावर माननीय श्री MD शर्मा चीफ ER मैनेजार और मिस्टर NJ दास सीनियर ER मैनेजार डांगरिया लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय बिथांनो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो खावलायनाय जाबाय आंनिफ्राय लाबोजानाय दिनैनि बिसम्बि बेखेवगिरि आलासि गाय आलासि गेदेमा बिथां आरो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन आरो मानगोनां गुबुन गुबुन जिल्ला आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय थान्दै नोंथांमोन बिबानगिरि नोंथांमोन आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो
आगोलावनो हांख्रायना लाबोनाय बायदि जोंनि साखाथियाव थानाय बङाइगाव रिफाइनारि नि बिथां मानिनां एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर बिथां मुस्रि LW खंबीर बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हाबाय बेखायनो आं बिथांखौ सिनायथि होनो लानो सानदों आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय Now I am going to introduce our chief guest and inaugurator of this souvenir Honorable Mr. LW Khongbir and welcome with an aranai and congratulate him बेनि उनाव आङो सिनायथि होनो सानदों आमार माजर आसे बङाइगाव रिफाइनारि रे माननीय MD शर्मा चिफ एआर मेनेजार তেখেতো আমার মাজত আছে তেখেতক কন্টেক্ট সময় থিয় হৈ নিজৰ পৰিচয় দিয়াৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ বড় সাহিত্য সভা আৰু আমাৰ অগ্ৰণা সমিতিৰ পৰা এখন আৰণেৰে আদৰণি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত আছে মিস্টাৰ NJ দাস তেখেত সিনিয়ৰ ইয়াৰ মেনেজাৰ বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰি গতিকে তেখেতক কন্টেক্ট থিয় হৈ নিজৰ পৰিচয় দিয়াৰ লগতে আমাৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো Nania habapari lekha unni habapari ko mafung takai ang apot gisa ko masih gis bitangko khulna jaba Mangga raja raja nontaman dana जोङो फैनोसै दिनैनि बे हाबाफारि गाहाय फोरबो बेनो जाबाय बिसम्बि बेखेवनाय आरो बिसम्बि बेखेवनाय हिसाबै जोङो हांख्रायना लाबोनाय आलासि बिथांखौ एसे आगोलावसो सिनायथि होखांबाय दा आं बिथांखौ बिसम्बि बेखेवनो खावलायनो नागिरदों Now I would like to request Mr. LW Khongbir Executive Manager of BGR Dhaligao to inaugurate the souvenir and other books and immediately after inaugurating the souvenir, he will briefly address the public. Please. I am the chairman. Once again, I would like to request Honorable Inaugurator to inaugurate the history of Bodo Sahitya Sabha. This moment. Respected President of the Bodo Sahitya Sabha, distinguished and learned personalities from the Northeast sitting on the dais, my colleagues from Bongaigaon Refinery, the esteemed members of the literary communities from various locations of the Bodoland Territorial Autonomous District, the organizers, ladies, gentlemen, and my dear students, it's a great privilege for me to be part of your 55th annual conference of the Bodo Thundai Afat. At this auspicious moment, I'm very glad to share my feelings with you, and I wish you all, including your family members, a very happy Domashi and New Year greetings. And this New Year, I am sure it will herald with new joys, hopes and aspirations with every fulfillment. As I understand, this is a forum of socio-literary apex body of the Bodos of the Northeast India. The apex body is continually striving to educate the people with knowledge and literature. The literary body is putting its best efforts and commitment to the development of Bodo language as well as the well-being of the people across each section. Bodo Thundai Afat, a literary organization of the Bodo Society which came into existence on November 16 in 1952 at Basugaon of the then Bolpara district of Assam under the leadership of late Joy Bhadra Hagsar as president
and late Sonaram Thausen as General Secretary. This Bodo Tundai Afad is the mirror of the Bodos, which projects the existence of socio-cultural, political, and even the language of the Bodos. I also congratulate Sri Rajendra Kumar Brahma for achieving the prestigious Sahitya Academy Award 2015 and all those Bodos literaries who had achieved similar awards conferred by the Government of India for the meaningful contribution towards Bodo literature. Bodos have the separate rich cultural existence as an unique identity of the race. They have self-reliance, cultural activities like weaving of endi, dokhana, hadar, arnai, gamosa, and homemade agricultural tools and many types of furniture. As of now, agriculture is the main livelihood of the Bodos and simplicity is their identity. But I am sure the Bodos can rapidly prosper if peace and harmony is maintained amongst the people living in this region. The greatest achievement of the Bodo Tunlai Afad is the inclusion of the Bodo language in the 8th schedule of the Indian Constitution in January 7th in the year 2004. As so far, this language is studied in master degree courses in Guwahati University, Bodoland University Kokrajhar, and is being introduced in Dibrugarh University and the Krishna Kanta Handik Open University in Guwahati. I also appreciate that the Bodo language has become an official language of the BTAD since Bodo Accord and an associate language of Assam. I'm sure the Apex body will be able to fulfill every aspect of literature during this 2 days colorful program that was held yesterday and today being held here at Mukacharan Brahma Fatar, Bihirangao. And definitely it will spread the message of love and unity amongst the masses. I'm happy that the souvenir which have been released on the occasion and the reception committee has given me this privilege to inaugurate the souvenir I Sarfang, and also the other one is the history of the Sabha. The Central Executive Committee and the Reception Committee have made great efforts by publishing the souvenirs on this great occasion. I am deeply impressed upon raising such literary awareness among the Bodo people, and I appreciate your best efforts for publication within a time frame. I sincerely thank the President of the Bodo Sahitya Sabha, Dr. Kameswar Brahma, and the General Secretary, Sri Kamala Kanta Mushahari, for giving me this opportunity to inaugurate this grand souvenir, I Sarfang. I hope people will pay interest in reading this souvenir and enjoy the fruitful result. This souvenir is an effective tool for reflecting the ethnicity of the Bodo people and its culture, values and custom, which we can find in various articles, stories and poems written in the souvenir. And I'm sure it will be very good and useful for the students also. With these few words, I would like to conclude my speech. And once again, I wish you all present here a very, very happy and prosperous New Year 2016 and Bodo Thunlai Afat Jolang Mel a grand success. Bodo Thundai Afat Tangnanwi Tang. Long live Bodo Sahitya Sabha. Thank you.
दैदेननाय मानगोनां मासिगिरि तामहिनबा बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां दीपक कुमार बसुमतारी आरो बिसम्बि बेखेवगिरि respected LW Kongi Executive Director BGR Dhaligaon आरो जोंनि बर'नि गेदेमा लिरगिरि थुनलाइ सिबिगिरि नोंथांमोन दा आङो फारि फारियै बर' थुनलाइ आफादा सेबखांनानै दिहुननाय फोसावनाय बिजाबफोरखौ आङो फारियै बेखेवहोनो आखायाव लादों दा गिबि आङो बेखेवहोनो आखायाव लादों बिरहांगामि हालामनि सुंद' जारिमिन बेखौ बेखेवगोन डक्टर कामेश्वर ब्रह्म सार बिथाङा बिरहांगामि हालामनि सुंद' जारिमिन A Short History of Birhanggaon Area बे बिजाबखौ बेखेवखांबाय नेक्स्ट साबायखर थाबाय दानिया बेखौनो आखायाव लागोन बायदि बिथिं लिरगिरिया रुपनाथ बसुमतारी बे बिजाबखौ बेखेवनानै होनो थाखाय बायदि बिथिं रुपनाथ बसुमतारी सुजुनाय बायदि बिथिं बिजाबखौ बेखेवखांबाय दानिया उननि हाबाफारियाव साबायखर थाबाय बेनि उनाव गांसे बिजाब दङ केस्टार ब्रिजनि मेयर बे बिजाबखौ बेखेवगोन जोंनि मानगोनां लिरगिरि आदा साबायखर थाबाय Now I would like to request to inaugurate a book Semenantau गोथां बिलाइ आन्दोनि सल' जतिन्द्रनाथ बर'नि बेखौ बेखेवखांबाय साबायखर थाबाय आदा डक्टर मंगल सिंह हाजवारी बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बिजाब बेखेवगिरि बिथांमोननिसिम बे समाव आंनि गिबि बिथा रायथाइ बिजाब बेखौ लिरदों महेश्वर बसुमतारी बिथाङा साबायखर बावनाय जाबाय बे समाव खन्थाइ बिजाब
साबायखर थाबाय बिजाब बेखेवगिरि बिथांमोननिसिम दानिया साबायखर थाबाय अनिमा बसुमतारीनि गोनांथिया नोंनि नङा बिजाबखौ बेखेवनानै होगिरिफोरनिसिम दा जोंहा आरो गांनै बिजाब दं साबायखर थाबाय मावफुंगायारिनि गांनै बिजाब बेखेवनानै होग्रा बिथांमोननिसिम बर' साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डॉक्टर मंगल सिंह हाज'वारी बिथांनिसिम आं गुरैयै खावलायदों बे बिजाबखौ गुरैयै खावलायबाय बेखेवना होनो थाखाय साबायखर थाबाय जांख्रिथायाव थांनि फै बेद मुसाहारिनि बिजाबखौ बेखेवना होनायनि थाखाय गांसे बिजाब दङ साबायखर थाबाय सर्ट गांसे बिजाबखौ बेखेवनानै होनायनि थाखाय दानिया गांसे बिजाब दङ साबायखर थाबाय गेदेमा सुबुंफोरनि साबायखर थाबाय बिजाबखौ बेखेवना होनायनि थाखाय जोबथारनायाव आरो गांसेल'सै साबायखर थाबाय